Hello everyone, it is me, Chef James MacInnis, and I am back doing a reaction to Your Food Labs. Your Food Labs, or YFL, has shown up a few times in my comment sections as the next thing I have to watch if I'm going to continue this deep dive into Indian cuisine. So I clicked on their page, saw a couple videos, I looked at something that I want to eat from the thumbnail. And why is it something that I want to eat? Well, I don't want to eat it, it's not going to be interesting. And two, when we reach 2,000 subscribers, I'm going to pop up a poll on my community tab where I'll let you vote on 3 or 4 dishes that I pick that we've watched together. And I will make it. You'll get to watch me stumble through it. And either it'll be awesome or I'll screw it up hard. I don't know. So with that out of the way, let's get into today's video. We are doing Paneer crispy recipe, restaurant style Paneer starter. Something I can't read. Chef Sanjyot Keer. What's up guys, Sanjyot Keer here. Welcome to YFL. रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी पनीर की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और रेस्टोरेंट स्टाइल ज़रूर है बट घर पे एक बार बना के देखो, रेस्टोरेंट से भी बेटर बन जाती है क्योंकि इसको बनाने का जो तरीका ना एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से आज बताने वाला हूँ। और जो लोगों को दिक्कत आती है ना कि पनीर को जब कोट करके फ्राई करते तो कोटिंग निकल जाती है, पनीर टूट जाता है या क्रिस्पी नहीं बनता है, वो सारी दिक्कतें आपकी बिल्कुल नहीं होएगी इस वीडियो को देखने के बाद। एकदम परफेक्ट और सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि पनीर आपका हमेशा एकदम पतली सी कोटिंग आएगी, क्रिस्पी सी कोटिंग आएगी और बिल्कुल भी कोटिंग निकलेगी नहीं। और फिर जब इसको सॉस में आप टॉस करोगे तो एकदम डिलिशियस वाला क्रिस्पी पनीर बन जाता है। और एक चीज़, जब रेस्टोरेंट में जब भी पनीर क्रिस्पी या ये जो रेसिपीज़ बनती हैं तो एक होममेड सॉस यूज़ की जाती है। तो होममेड सॉस कैसे बनानी है वो भी आपको बताने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग रेसिपी है, डिलिशियस रेसिपी है और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन YFL। और अगर आपको हमारे YFL होम के प्रोडक्ट्स चेकआउट करने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है और साथ ही में आपको प्रोडक्ट्स भी नीचे वीडियो के दिख जाएंगे एंड आई एम श्योर दैट यू विल लव यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स एट योर होम। अभी सबसे पहले ये स्पेशल वाली होममेड सॉस कैसे बनती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 20 से 25 कश्मीरी लाल मिर्चों को कट करके डीसीड करके सोक कर लिया था गर्म पानी में। आधे घंटे के लिए सोक कर लीजिए या 3-4 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में सोक कर लीजिए। अब इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डालिए, थोड़ा पानी यूज करके एक फाइन पेस्ट में इसको पीस लीजिए। ये आप देख सकते हो, इसको मैंने पीस लिया है और ये पेस्ट रेडी हो गई है। इसे अभी हमें पका लेना है। तो एक पैन के अंदर या बर्तन के अंदर तेल लीजिए, 4-5 बड़े चम्मच तेल। Okay, so just to start off the bat, I am always thankful when they do put subtitles with English, like Chef Ravin Barar does. This doesn't have that, but I'm still able to at least follow the recipe. Up in the corner there, he's got his ingredients translated at least. So I am thankful for that. Sometimes I play around with the closed caption settings, and sometimes there's language settings. Hey, you know what? एक बार गर्म हो जाए ये पेस्ट को ऐड कर दीजिए और स्टर करते हुए इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका जो टेक्सचर है वो क्रम्बली हो जाए और इसका कलर एकदम डार्क हो जाए। ये आप देख सकते हो लगभग 7-8 मिनट पकाने के बाद इसका टेक्सचर कंप्लीटली चेंज हो गया है। ऐसा ही टेक्सचर हो जाना चाहिए। एक बार इस तरीके से आपने इसे पका लिया है, फ्लेम को बंद कर लीजिए और इस स्टेज पर 1 चम्मच इसमें विनेगर यानी कि सिरका ऐड कर दीजिए। अच्छे से स्टर कर लीजिए। विनेगर और तेल की वजह से ये पेस्ट जो है वो जल्द खराब नहीं होगी। हमारी पेस्ट रेडी हो गई है, इसे अभी रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लीजिए। तो हमारी रेड चिली पेस्ट बन गई है। अब ये जो पेस्ट है ना, ये पूरी पेस्ट नहीं यूज़ होने वाली है इस रेसिपी में, सिर्फ 1 चम्मच यूज़ करेंगे। ज़्यादा इसलिए बनाएंगे क्योंकि ख़राब नहीं होती। तो इसको अच्छे से स्टोर करके रखिए बर्नी के अंदर। और जितने भी रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवीज बनती है रेड कलर की, या सेजवान फ्राइड राइस बनते हैं या नूडल्स बनते हैं। So that's interesting. They've got the oil and the vinegar in there, and he's referencing that it won't spoil. So from what I've learned from reading the comments, in India it's really hot and it's really humid and food can spoil really fast. So when I was mentioning in one of the other videos about washing meats and stuff, somebody said, hey, when you're killing it that day and it's so hot and humid, even an hour later when you go to use it, it could already start to develop a smell. So the fact that this is something that you can leave in a jar
in such a hot and humid climate, I think that's really cool. And that, like, I know if he's saying it won't spoil there, I know here I could make a big batch of that and leave it in the jar for probably till it goes moldy, it won't spoil. So that's actually really interesting. I also do like so it can be really hard sometimes when you have a recipe that calls for like 1 tablespoon of an ingredient, and it's almost impossible to just get 1 tablespoon. So you have to make like a jar of it. Sometimes, like if it's a one-off, sometimes people might not be keen on making it. But if it's something like just like red chili paste, I imagine that's something that you can use in a ton of recipes. So it's probably like having a tomato paste. Like I always have like a squeeze tube of tomato paste kind of on the go. So I imagine it's kind of the very same thing where you're just throwing this in everything. So it's good to have around. है सेजवान सॉस के बदले, और इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है, तो आपको आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और साथ ही में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है. एक बार बना के देखिए, कंप्लीटली अलग रिजल्ट आएगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो इस पेस्ट को आप 2 टेबलस्पून लगभग सेजवान सॉस से रिप्लेस कर देना. बट मैं ऐसे सजेस्ट करूंगा एक बार बनाओ, एकदम अलग रिजल्ट्स आते हैं. अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमें पनीर को कोट करके फ्राई करना है, और इसके करने का सही तरीका आपको बता रहा हूं, जिससे आप हमेशा पनीर को एकदम परफेक्टली क्रिस्पी तरीके से कोट करके फ्राई कर पाओगे. ये करते कैसे हैं वो देख लेते हैं. पनीर को कोट करने से पहले तेल चढ़ा देते हैं कि पनीर कोट हो जाए, तो इसे हम इमीडिएटली फ्राई कर पाएं. यहाँ पर मैंने 300 से 350 ग्राम पनीर ले लिया है. इसे आप देख सकते हो मैंने कैसे कट कर लिया. आप स्क्वायर्स में भी इसे कट कर सकते हैं. अब इसे कोट करने के लिए हमें सिर्फ कॉर्नफ्लावर चाहिए, बस, और कोई चीज़ नहीं चाहिए. यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लावर यूज़ करने वाला हूँ और ग्रेजुअली इसे ऐड करने वाला हूँ, और इस तरीके से. Got some questions right now, and before anybody comments and says, why don't you research this stuff? It's been suggested that I do a little bit of light research before watching these, but I do find it's a lot more entertaining and interesting, and I get bored reading. So if I just ask questions and I have my community here answer them for me, I always prefer the engagement with you. There are some times, though, I am starting to do a little research. Usually after I watch the video, though, where I can't wait for some answers. But I'm going to ask, what exactly is paneer? Is that like a tofu type product? Or, what exactly is that? I'm assuming this is a vegetarian dish. Second, when he's using the corn flour mixture, and he said that's all you need, I do something like that at the restaurant when we do pan-seared fish. What we'll do is I mix cornstarch at a 25% ratio, 25% cornstarch, 75% regular flour. Because the cornstarch adds a crispiness to it. You don't want to go straight cornstarch because it tastes weird. But when you go 75% flour, 25% cornstarch, you get a real good balance of crispiness. And depending what I'm crisping, sometimes I will flour it all, let it sit on the counter for a few minutes until the moisture from the fish or chicken or whatever makes it wet and sloppy, and then I'll re-flour it for a second coating, and then you have a built-up layer that gives a real good crisp. Really good for ossobuco, which is veal shank. Also good for fish. हाथों से या तो मिक्स कर सकते हैं, या जो बोल है आपका उसको शेक कीजिए और इसको कोट कर लीजिए. एक बार आपने से एक बार कोट किया, फिर से थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर डालिए, फिर से कोट कर लीजिए. पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, बस कोट कर लेना. आप देखेंगे एक पतली सी एक लेयर जो है कॉर्नफ्लावर की आपके पनीर पे आ जाएगी. ये आप देख सकते हो मैंने पनीर को कोट कर लिया है. बस इसी तरीके से आपको कोट करना है, कोई नमक नहीं डालना और कुछ नहीं डालना है. तेल जो आपका है वो 160 to 70 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए, फ्लेम हाई होनी चाहिए. पनीर को बैचेस में आपको फ्राई करना है, एक साथ नहीं फ्राई करना है, नहीं तो तेल ठंडा हो जाता है और कोटिंग सॉगी हो जाती है. पनीर ऐड करने के बाद इसको कुछ सेकंड्स के लिए स्टर नहीं करना है, नहीं तो कोटिंग जो है आपकी करछी पे चिपक जाएगी. एक बार कोटिंग सेट हो जाए इसको स्टर कर लीजिए और बस लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए ही पकाना है. इसकी एक बार कोटिंग सेट हो जाए तब इसको निकाल लेना है, क्योंकि हम इसे आज डबल फ्राई करने वाले हैं. एक बार इस तरीके से पनीर फ्राई जो है इसको निकाल कर छन्नी में ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए.
बाकी के भी पनीर को सेम तरीके से फ्राई कर लीजिए और इसे अभी साइड पर रख दीजिए जब तक हम इसकी सॉस बना लेंगे। तो आपने देखा पनीर को कोट करने का तरीका कितना आसान है, सिर्फ कॉर्नफ्लावर यूज़ कीजिए। ये फॉर्मूला हमेशा एकदम परफेक्ट काम आता है और एकदम क्रिस्पी आपका पनीर रहेगा। आपने देखा कोटिंग बिल्कुल निकली नहीं, पनीर टूटा नहीं, एकदम परफेक्ट क्रिस्प कोटिंग आ गई है। लेकिन इसको सुपर क्रिस्प करने के लिए हम इसे फ्लैश फ्राई करेंगे, डबल फ्राई करेंगे एकदम गरम गरम तेल में, कि जब सॉस बन जाएगी गरम गरम तेल में डालेंगे, फिर इसे सॉस में उठा के डाल देंगे, पनीर एकदम। Okay, so what he's talking about right now when he mentions, we're gonna, he says that we're gonna fry it now and then we're gonna fry it again after the sauce is ready to maintain the crispiness. So we would call that blanching. And that's something specifically, say, for example, French fries. That's what we do with French fries a lot, is we will, and this is going to sound weird. If you know by now, I'm in Canada, and you know that we're a metric company, or country, but we still cook in Fahrenheit, okay? For the most part, temperatures are still Fahrenheit, weights are mostly pounds, it's only officially on paper we're metric. So you would set your fryer oil down to like 250, 220, 250, somewhere in that range, and you would cook your French fries until they are like cooked through. You would pull them out, towel them dry, and then you would turn the fryer up to 350. And when you're ready to fry your French fries, you will now take the blanched fries and do a quick dunk. And that will give you your crispy at the end. So the lower temperature fry gives you a cook all the way through without burning the outside. Then the quick fry at the higher temp gives you that crisp while getting you to a temperature on the inside that's hot. आपको एकदम वैसे क्रिस्पी नहीं करना है, बेसिक क्रिस्पीनेस चाहिए, तो आप इस पनीर को डायरेक्टली भी सॉस में डाल सकते हो। डबल फ्राइंग अवॉइड कर सकते हो। खाली पनीर को अगर डायरेक्टली ऐड करने वाले हो, थोड़ा सा और फ्राई कर देना, हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक फ्राई कर लेना और फिर आप सॉस में डालना। सॉस बनाने का तरीका बहुत आसान है। नेक्स्ट स्टेप वो है, फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली इसको फ्राई करेंगे सॉस बनने के बाद और हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। वो प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब देख सकते हो तेल को मैंने साइड पे गर्म होने रख दिया है कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जब हमारी सॉस बन जाए। सॉस बनाने के लिए एक वॉक को अच्छे से गर्म कीजिए। वॉक जब गर्म हो जाए तब इसमें 1 से 2 चम्मच तेल ऐड कीजिए। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक और 3 स्लाइस की हुई हरी मिर्ची डाल दीजिए। हाई फ्लेम पर ही लगभग कुछ सेकेंड्स के लिए इसको कुक करना है। उसके बाद इसमें 1 जूलियन की हुई हरी शिमला मिर्च और 3 स्लाइस के हुए प्याज ऐड करने, जो स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट होता है ना, वो ऐड करना है और इसको क्विकली स्टर कर लेना है। अब इसमें जो हमने चिली पेस्ट बनाई थी 1 बड़ा चम्मच ऐड कर दीजिए। 3 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1/4 टीस्पून लाइट सोया सॉस, 1/4 टीस्पून विनेगर, 1 चुटकी व्हाइट पेपर पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद इसमें 100 से 150 ml गर्म पानी या वेजिटेबल स्टॉक आपने ऐड करना है और अच्छे से स्टर कर लेना है और एक बॉईल पे ले आना है। एक बार जब ये बॉईल पे आ जाए, इस सॉस को थिक करने के लिए एक स्लरी बनानी है। 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च और 2 से 3 टेबलस्पून पानी को मिक्स कर लीजिए और एक लम्प फ्री स्लरी बना लीजिए। इस स्लरी को धीरे धीरे ऐड करके अच्छे से स्टर कीजिए। सॉस को पका लीजिए जब तक ये गाढ़ी हो जाती है। आप देख सकते हो सॉस को मैं So we use the slurry method like this with cornstarch at the restaurant, mostly for dessert sauces. We have a raspberry sauce that we make for our cheesecake. We thicken with cornstarch. And we usually, for savory sauces, use a traditional like French roux, half fat, half flour. I do use the slurry. There's only one savory sauce I tend to use it for, and that is au jus. Because of the it's a little lighter than using a roux, and it gives things this it gives it like a sheen, almost like a glossy finish. So I use that for the au jus when we run a prime rib special. Also, I've been known from time to time to make, instead of using water, putting soy sauce. Like I'll put some cornstarch in the soy sauce, and that way it gives the soy sauce, when we do stir fry, it gives it a little more hold, so you don't have like a puddle of sauce at the bottom of a stir fry. है। इस स्टेज पर आपको टेस्ट कर लेना है
और सीजनिंग चेक कर लेनी है। अगर सीजनिंग को एडजस्ट करना है यहाँ पर आप कर सकते हो। इस स्टेज पर सॉस की फ्लेम को या तो लो कर दीजिए या बंद कर दीजिए जब तक आप पनीर को डबल फ्राई कर रहे हैं। पनीर को डबल फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, लगभग 170-80 डिग्री सेल्सियस पर। पनीर को इसमें केयरफुली ऐड कीजिए। कुछ ही सेकंड्स के लिए फिर से आपको फ्राई करना है कि एकदम सुपर क्रिस्प हो जाए। ये आप देख सकते हो, पनीर को मैंने फ्राई कर लिया, एकदम सुपर क्रिस्प हो गया है। इसे निकाल कर सॉस में ऐड कर दीजिए। साथ ही में कटे हुए स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स ऐड कीजिए। अच्छे से इसको स्टर कर लीजिए फटाफट, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो कोटिंग फिर से सॉगी हो जाएगी। फटाफट कोट कर लीजिए। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कलर आया है, कितना ब्यूटीफुल ये क्रिस्पी पनीर लग रहा है। हमारा क्रिस्पी पनीर रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी हो गया। लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल। Just so you know, guys, while he's plating it, there was music, so I muted it. Or I'm going to mute it when I edit this, because when you do reaction videos like this, it's fine to use all the content as long as you're transforming it, and by adding commentary, that's what I'm doing. But music is really never okay to use. So there's a separate set of laws for music about it. So basically, you have to mute it. Sometimes I will just wait till the video is uploaded, and YouTube's AI has the ability to take out the music. And sometimes I just cut the scenes out altogether. This time, because I thought it would be boring watching him plate with no music, I thought I would just ramble over it like this. बहुत ही डिलिशियस बनता है रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर, एंड आई एम श्योर कि आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। Alright, so that was my first time watching a Your Food Lab video. At least I think it's the first time I might have watched them here or there in the past. This channel says it's 8 years old, so I may have come across these before but never really taken more than a passing glance at them. But that actually was very informative. I liked the fact that, you know, when he makes the chili or the chili sauce at the beginning, he's like, this will hold, this is way more than you need, you'll use it in a lot of things, and offers the Szechuan sauce as an alternative if you don't feel like making that. Goes through the 2 frying method pretty well. I have no complaints over this. I found that to be very informative. So definitely, probably going to watch another 1 or 2 more Food Lab videos next, but I won't post them in that order. I'll stagger them out. Pardon me. So anyways, thanks for watching this video. I hope I didn't make it too long, but I hope I gave you some insight into my thinking as a Western trained chef when I'm learning about Indian cuisine. Until next time, I've been Chef James MacInnis.